तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले भगवत गीता। तो मैं आज आपको एक चैप्टर रीड जो भी हो करने वाली हूँ। तो ये देखो मेरी भगवत गीता। तो मैं आज आपको रीड करके बताने वाली हूँ फर्स्ट चैप्टर। पर अगर आपको सारे चैप्टर चाहिए तो सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। आपको पता होगा मैं ये बोलने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है बर्थ ऑफ दिस। तो चलो स्टार्ट। मैं ये लाइन कितनी बार पूछ सकती, तो चलो स्टार्ट करते कितनी बार ही पूछ चुके हैं। About 5,000 years ago, Mathura, a small town in the present state of Uttar Pradesh, India, was under the rule of tyrannical king named Kans. About मतलब 5,000 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, एक तो मथुरा था। उसमें छोटा सा स्टेट उत्तर प्रदेश में था मथुरा। वो एक तो रूल के अंदर था कंस के इसमें कंसा लिखा हुआ है, कंस का। तो उसमें एक गंदा सा मतलब बहुत क्रूल राजा वो करता था, रूल करता था। तो कंस इतना क्रूल था। कंस was very cruel that he imprisoned his father Ugrasen and declared himself the king of Mathura. Ugrasen was a kind and just ruler। कि मतलब इसमें कंस इतना क्रूल और गंदा था, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि उसने अपने फादर को जेल में डाल दिया। उग्रसेन थे उसके फादर। तो वो तो कंस ने उसे खुद ही राजा बना लिया। मैं मथुरा का राजा हूँ। उग्रसेन वॉज काइंड एंड जस्ट रूलर, मतलब वो अच्छा था। उग्रसेन उस कंस की तरह गंदा नहीं था। कंस से ऑपोजिट, मतलब मैंने बता ही दिया कि कंस गंदा था, उग्रसेन अच्छा था। कंस वाज ऑपोजिट। इट वॉज द टाइम फॉर द पीपल ऑफ मथुरा टू पुट अप विथ Kans' extravagance and unfair rule. Above all this, he was constantly on the war with other rulers of the Yadu dynasty. It had hampered the peace of Mathura. Means मतलब वो एक बहुत डिफिकल्टी से, अरे कब जाएगा ये कंस, मतलब कुछ ऐसे ही सोचने, मुझे क्या पता। ऐसे मतलब वो उन्हें बहुत मुश्किल होती थी। जो लोग मथुरा में रहते थे। फिर वो जो कंस था ना, वो ना ज़्यादा पैसे बर्बाद करने वाला था कंस। और वो बहुत गंदा रूल करता था। वो सबके सब जो भी उसे हल्का सा भी बात नहीं मानता था उसको मतलब कूटता होगा। इसमें ये बता रहा है। Above all this, he was constantly on the war with the other rulers of the Yadu dynasty. मतलब वो हमेशा लड़ाई झगड़े करता रहता है यादू डायनेस्टी के। आपको बाद में पता चल जाएगा यादू डायनेस्टी कौन है। इट हैड हैम्पर्ड द पीस ऑफ मथुरा। वो पूरा मथुरा का पीस जो है, मतलब शांति जो है, उसे छीन लिया था। Kans loved his cousin Devaki very. She decided to marry his sister with Vasudev. Vasudev was a Yadu king, and Kans had in his mind that his frequent wars with Yadu dynasty would come to an end. Mathura was decorated beautifully and wore a festive look. Everyone was happy in festive spirits. कि जो कंस था उसकी कज़न थी देवकी, कज़न सिस्टर, ब्रदर तो हो गई नहीं, सिस्टर ही हुई। बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो उससे ना उसकी शादी करा दी वासुदेव से। वासुदेव एक यादव का किंग था। वासुदेव यादव उसका किंग था। जो कंस उससे झगड़ा ही करता था यादव डायनेस्टी का। तो उसे लगा कि जब उसने वासुदेव से शादी करा दी तो कंस को लगा कि उसका वो झगड़ा खत्म हो जाएगा यादव डायनेस्टी के। और उसने ये मथुरा को अच्छे से सजाया था और अच्छा सा फेस्टिव लुक दिया था। सब कोई खुश थे। बहुत सारे कंस, cunning as he was, thought, now I'll have my hold on the kingdom of Vasudev and rule the Yadus
as per my own free will. After the wedding, Kans decided to drive the royal couple home himself to shower on the kingly courtesy as was very common those days. As soon Kans took the reins of the wedding chariot in his hand, a divine voice thundered from the sky. What? Kans, you fool! You don't know what ill fate is going to fall on you. Sorry, अच्छे से बैठे. Kans, you don't know what ill fate is going to fall on you. कि कंस बहुत गंदा था. वो सोचा कि वो ना मुझे यही लगा था कि ये झगड़ा खत्म हो जाएगा क्योंकि वो राज कर लेगा ये यादव डायनेस्टी के वो जो होता है किंगडम पे, वो बिना झगड़े के वो उसे लगा राज के लिए. तो ऐसा हुआ नहीं था. उसकी फिर शादी के बाद कंस की नहीं देवकी की शादी के बाद वो जो रॉयल कपल था, मतलब शादी वो होम, उसको अपने घर लेके आया था और उनको शावर मतलब उनकी सेवा थोड़ी देर के लिए कर रहा था. तो वो बहुत कॉमन था उस दिन. तो वो उनसे बहुत प्यार करता था. पर एक दिन कंस ने जब वो वेडिंग कैरियट मतलब वो एक तो वो रथ जो भी है वो उससे वो लेके जा रहा था. तभी ये डिवाइन वॉइस मतलब माया की वॉइस पता नहीं क्या होता, एक डिवाइन वॉइस आवाज से मतलब आकाश से आई. तो उसने बोला कंस तू बेवकूफ, तुझे पता ही नहीं कि तुझे क्या गंदा फेट दिया, मतलब किस्मत दी है भगवान ने. अब मैं आगे रीड करती हूँ. By giving Devki's hand to Vasudev, you have signed your own death sentence. कि तुमने बेवकूफ़ी करती है देवकी और वासुदेव की शादी करा के. The eighth son of Devki will kill you. मतलब जो देवकी बच्चा देगा उसका 8वां बच्चा उसे मार देगा. Hearing this, Kans froze with fear. He was very upset and furious. He immediately decided to kill Devki at the spot. He thought, if I'll kill Devki, no child can be born out of her. Thinking so, he drew out his sword and raised it behind his cousin. कितना गंदा है कि वो डर गया. वो बहुत अपसेट और फ्यूरियस था, मतलब बहुत दुखी और गुस्से में था. तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो देवकी को मार देगा. तो उसने अभी तलवार निकाली और उसे मारने वाला था वो. Vasudev was horrified at his cruelty and fell on his knees. Oh, Kans, he pleaded, please do not kill your sister. I shall personally surrender to you all children she gives birth to, so that the voice of the oracle does not come true. कि वासुदेव बहुत डर गया कि उसे मारेगा. तो वो उसके पैर पड़ गया. तो कंस ने कहा, कंस से वो ऐसे क्या बोलते रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज़ डू नॉट किल योर सिस्टर, कि तुम अपनी बहन को मत मारो. मैं तुम्हें सारे बच्चे दे दूंगा जो को पैदा करेगी. तो ताकि वो जो भविष्यवाणी जो आई थी वो सच ना हो पाए. ऐसा तो कोई कर नहीं सकता. Hearing this, the evil king did not kill Devki. He said, then you will live in my palace as prisoners. Vasudev had no choice but to accept his decision. Kans laughed out loudly and spoke, now I'll see how the eighth son of the Devki would kill me. I'll kill him soon as he born. I'll kill him soon as he born. He was content at thought that the situation was under his control. कि मतलब सुन के कि कंस सोचा कि मैं उसे नहीं मारूंगा. उसने कहा कि तुम मेरे पैलेस में मेरे महल में प्रिजनर्स की तरह रहोगे. प्रिजनर्स मतलब जो जेल में रहता है. वासुदेव के पास कोई ऑप्शन नहीं था पर उसे लेना पड़ा वो ऑप्शन. कंस बहुत जुड़ गया. पता नहीं कि अब मैं देखूंगा कौन कैसे 8वां
देवकी का सन बेटा मुझे मारेगा, मैं उसे मार दूंगा जब वो पैदा होगा। As was decided by Kams, Devaki and her husband Vasudev convened in the palace dungeon. तो उसके पैलेस dungeon में उसको dungeon मतलब वो जो अंडरग्राउंड वाला प्रिजन में उनको रख दिया। तो जब देवकी बच्चा देती थी तब वो उसे मार देता था। ऐसे ही करते करते उन्होंने 7 बच्चों को मार दिया। वो बहरा हो गया। टू ऑल हार्ट रेंडिंग क्राइज ऑफ हिज श्रीराम, मतलब इसमें डेफ ईयर लिखा, मतलब वो सुनता ही नहीं था, इसलिए डेफ ईयर लिखा है। टू ऑल हार्ट रेंडिंग क्राइज ऑफ द सिस्टम, मतलब वो बहुत दिल दुखता था उसका, देवकी का दुखता ही वो उसको मारता था। और तो वो रोती थी, मतलब चिल्ला के उसे बोलती होगी कि मत मारो। तो वो कहती थी, ओ ब्रदर प्लीज स्पेयर द लाइफ ऑफ माई चिल्ड्रन, दे विल नेवर हार्म यू, आई प्रॉमिस, pleaded Devaki sobbing, but in vain. Each time consecrated the child mercilessly. कि वो बोलती थी, ओ भाई मेरे बच्चों की जान को बख्श दो, spare the life of my children, तो वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। वो रोते रोते बोलती थी, पर कंस तो सुनने वाला नहीं था, इसलिए इसमें लिखा हुआ था। और वो बिना किसी दया के मार देता था, मतलब कि ऐसे 9 साल चले गए। पर देवकी को nine years passed before Devaki got pregnant for the 8th time. Comes troubled by the fear of his possible death, lost appetite and slept poorly at night. I won't be at peace till the child is born, he thought all the time. मतलब 9 साल चले गए, देवकी प्रेग्नेंट, उसके पेट में बच्चा। 8वीं बार के लिए कंस थोड़ा डरा हुआ था और of his possible death and lost his appetite and slept poorly at night. I won't be at peace till the child is born, he thought all the time. मतलब वो उसे शांति नहीं मिलेगी जब 8वां बच्चा पैदा होगा। उसके दिमाग में ये सब चलता। In the palace dungeon, मतलब अंडरग्राउंड प्रिजन, in the palace dungeon, Vasudev was trying his best to console his wife, but she was terrified. My 8th child will be born in a day, she spoke, crying bitterly, and my cruel, merciless, inhuman brother will kill this one too. Oh mighty Lord, please save my child. मतलब वो अंडरग्राउंड वाले पैलेस dungeon प्रिजन, अंडरग्राउंड प्रिजन, मैंने कुछ बार बता दिया, वासुदेव अपना पूरा कर रहा था कि अपनी वाइफ को मना ले कि वो ना डरे, पर वो डरी हुई थी कि मेरा 8वां बच्चा थोड़े दिन में हो जाएगा बॉर्न, मतलब 1 दिन में, बता रहे मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़े दिन में। वो रोते रोते बोले कि और मेरा गंदा भाई उसे मार देगा, ए भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। The night soon ended and it was dawn. Devaki spent most of the day in tears. The day again ended and the dusk gave way to a terrible night, as had not been seen earlier in Mathura. नाइट जल्दी एंड हो गई, मतलब रात जल्दी एंड हो गई और डॉन हो गया था। देवकी ने अपना रात और बहुत सारा टाइम रोने में बिता दिया था, रोने में। और वो दिन खत्म हो गया और एक टेरिबल नाइट आई, एज हैड नॉट बीन सीन अर्लियर इन मथुरा, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था मथुरा में। It seemed that the whole world understood Devaki's pain and joined her in the mourning for unborn child. मतलब उसे लगा कि देवकी के साथ सब कोई पेट में जुड़ गए for unborn child.
The wind howled angrily, the stars seemed to have split and apart to pour endless rains. Suddenly there was an eerie silence. Eerie silence मतलब बिल्कुल चुप. Eerie silence and then it was broken by the sound of the cry of the divine child. It was the voice of a child, a son, Devkarmanda. As soon as the child was born, the prison was filled with a dazzling, biting light. But उसमें पूरी रोशनी छा गई थी. देवकी थोड़ा बेहोश हो गई. Devki fainted at the sight, and Vasudev, mesmerized, the light converged into a spare, and the same voice of the oracle that scared Kans now spoke to Vasudeva. Take this child across river to a daughter, exchange your son for the girl, and child return to the prison immediately before anyone comes to know about the world of children. मतलब तुम अपने बच्चे को, वही जो जिसने तुमको डराया था, उसने बोला, उसी ओरेकल, उसी चीज ने बोला माया जब कि अपने बेटे को एक गर्ल चाइल्ड से एक्सचेंज कर लो और प्रिजन में लौट जाओ. इससे पहले कि कोई तुम्हें जान ले कि तुम्हारा बच्चा हुआ है, वरना कम से मार देगा. Hurriedly, without a word, Vasudev picked up his newborn son. Following a divine advice, he felt very sad as he had to separate the newborn child from his mother, but he knew that there were no options to waste the season. मतलब एक चीज पे ना, एक शब्द के वासुदेव ने अपने बच्चे को ऐसे उठा लिया, पर वो बहुत दुखी था क्योंकि उसे अपना क्योंकि उसे सेपरेट करना था अपने बच्चे को मदर से, बट उसे पता था कि कोई ऑप्शन नहीं था उसको बचाने का. Vasudev felt very doubtful about how he would get out of the prison unnoticed. There were 300 soldiers on guard outside, and it was dark, fearsome night. But what he saw astonished him greatly. All his problems were resolved one by one. As he approached the prison gate carrying the baby in a basket on his head, the doors opened on their own. Jadoo. Sorry. Vasudeva came out slowly to find his utter surprise that all the guards were asleep. It was raining heavily when Vasudev left for Gokul. He approached the banks of the river of Yamuna. मतलब अगर आपको बैंक्स मतलब नहीं पता है तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पता होना चाहिए. बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, मैं ये वाले बैंक्स नहीं बोल रही हूँ जिसमें पैसे जमा करते, मतलब वो जो होते हैं ना नदी के पास ले सैंड वगैरह होते हैं, उसे बैंक्स बोलते हैं. The river seemed to be seething with anger due to fierce winds and lions. It looked alive and ready to devour anyone to set foot in it. Vasudev was full of fear, hesitating of stepping into the river as if the river had sensed his fear. The turbulence subsided and won. Then a miracle happened. As soon as Vasudev's feet touched the river, the flow became normal and Yamuna made way for the Lord. To his amazement, वो आश्चर्यचकित हो गया. To his amazement, Vasudev saw a huge black snake raising its head from the waters behind him. Vasudev was very well. वो बहुत डरा हुआ था परिस्थिति. But soon realized that it meant no harm when he saw the serpent positioning its hood like an umbrella to save the newborn baby from rain. उसे लगा कि वो जो सर्पेंट था वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था.
The snake was none other than the Shekhnag, the snake god who is known as the roofing captain appeared to Lord Vishnu, and the newborn baby was the eighth incarnation of Lord Vishnu. मतलब वो शेषनाग जो था वो लॉर्ड विष्णु का वो पानी में जो ऊपर रहते हैं ना लॉर्ड विष्णु उनका ऐसे सारा दिखता है, ऐसे ही लॉर्ड विष्णु ही उनका सारा रहता है. Vasudev did not delay any further and proceeded in waist deep water, and finally was able to cross the river and reach the opposite bank safely. From there he reached Gokul. It was past midnight and the people of Gokul was fast asleep. Vasudev had no trouble in entering Nanda's house because the doors were open. Vasudev, by this time, had realized that his child was really someone special. He was a divine child. All his fear vanished, for he understood that when he could come this far, he would surely be able to complete the rest of his journey. Treading softly, Vasudev entered Yashoda's chamber. She was sleeping peacefully in her bed, and her baby girl beside her was awake, staring at the door. It was almost as she was expected him to come. Vasudev scooped Yashoda's baby girl in his other arm and placed his son in empty place next to Yashoda. With tears in his eyes, Vasudev kissed his son's forehead. He whispered, "Goodbye, my son," he whispered. Then, without looking back, he left Gokul in Nanda's daughter's arms. मतलब वो ऐसे whisper कर "Goodbye, my son." फिर वो बिना पीछे देखे वो नंद की डॉटर को अपने आम में ऐसे उठा के लेके Like before, Krishna protected the child from the heavy rains, and Vasudev returned to prison with baby girl. He entered his dark cell and laid the baby by Devaki's side. As soon as the child felt the heart fall on her back, she cried loudly, "Wah! The guards suddenly awoke from their sleep and became aware that the baby was born. They rushed to give him news. The eighth child, Slayer Kamsar, had taken birth. The evil king was both pleased and afraid to hear the news. Pleased that he would finally kill the eighth child of his sister, but he was also afraid that he might not be able to do so. सॉरी मेरे कफ हो रहा है. वो इवल किंग मतलब कंस को बोले कि वो बहुत खुश था, ये कंसों में खुश हूँ, पर वो डरा हुआ भी था कि वो मार ना पाए उसे. पर उसके fears, keeping aside all his fears, Kans rushed to the palace dungeon to execute the child who was said to be his slayer. He reached the dungeon in great anger. The palace guards trembled on seeing him. Kans entered the cell where his sister and her husband had been living for the past 9 years. Where is he? He roared at Drew. रोड मतलब दहाड़ना नहीं लायन की तरह. Where is he? मतलब वो चिल्लाया देवकी पे. Was weak from childbirth. Where is my slayer? Where is he? Thunder comes. मतलब वो बहुत गुस्से से बोला. Devaki regained her consciousness only after Vasudev had exchanged the baby. So Devaki thought that her eighth child was a daughter. She appealed to her brother. "Oh, Kans, my brother, my eighth child is a girl and not the son that oracle warned you about. How can she harm you? Please let Tony's live." Kans always ignored her cries. He loved his life more than anything else in the world.
He snatched the baby girl from Devki's arms and hurled the child against the prison walls. But for this time, the baby did not die. Instead, she flew up and for a second he remained suspended in the air to the utter amazement of everyone present there. The prison was filled once again with a blinding light. Kans covered his face to shield himself. पर इतना उजाला था कि वो अपने फेस को कवर किया, उसको ऐसे शील्ड करने के लिए. As the light subsided, मतलब बहुत सारा खत्म हुई लाइट, they realized that the child had changed into a goddess. Who are you and why are you here? Shouted Kans. The eighth form of divine goddess was dressed in shining garments and dazzling jewels. She looked contempt and pity at the bewildered cursor. Contempt and pity, मतलब उसे वो मार देती पर उसने मारा नहीं. She said, "Oh foolish Kans, there is no force of heaven or earth that can kill me. So how can you, O wretched creature?" मतलब wretch मतलब पागल. Your slayer is already born. He is now well and alive in a safe place, and one day he will come and kill you. Saying so, she disappeared, leaving behind a terror-stricken Kans. What is happening now? What I shall do to save myself? Wonder a shock comes at the turn of the events. Vasudev then narrated what had happened that night to his wife. Our son is a divine being. He is incarnation of Lord Vishnu. So do not lament, O Devki. Devki thought, though sad at his separation for his son, was happy for the baby. Both of them prayed to God that their son should not fall in the clutches of his evil uncle. Uncle matlab mama. Meanwhile, there was a great rejoicing in Gokul. The cow herds of Gokul were happy and beyond measure. A new baby boy was born to their beloved Nanda. The baby was named Krishna. वो baby Krishna थे, कृष्ण भगवान थे. Everyone in Nanda's family was very happy. People of Gokul flocked to Nanda's house to see the divine baby boy and to offer gifts. Everyone noticed that the child was no ordinary one. His skin has a bluish hue and his eyes twinkle merrily. He did not cry and always had a smile for everyone. Yashoda felt very proud of her newborn son who emitted so much divinity. In this way was born Lord Krishna, the supreme God who is the creator of everyone. He was born to save everyone from terrible tyrants like Kans. तो आज वीडियो की ही एंड होती है. तो ये चैप्टर मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है. और आप चाहते हो मैं दूसरा चैप्टर भी पढूं तो मेरा लाइक सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो आप, तो क्यों पढूं? आप किया करो तो मैं पढूं. तो चलो बाय बाय.